Now we will make a program for adding two double values. New file, save the file, add double.sm, and the programs which are here. Okay. स्टार्ट लेंगे हम डॉट टेक्स्ट डॉट डेटा एंड डॉट टेक्स्ट. हम डॉट डेटा में जो है अपना एक्चुअल डेटा जो वैल्यूज़ होती हैं हम इनिशियलाइज़ करते हैं my_1 colon with double, and values for suppose 8.11122, okay, and next value my double 2 having value 6.333 suppose. Okay, now we will come to the text. Load double core processor 1. ठीक है, ये लोडिंग पॉइंट वैल्यूज़ F2 $sign F2 कॉमा. यहाँ पे हम क्या लोड करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू my_1. नेक्स्ट लोड डबल core processor 1 and we'll use another register for the floating value. Our next my_2. Next will be load immediate, and we will shift the value which is here, the double value, in the V0, and for double it will be 3. Okay, add double. हमने ये दो वैल्यूज़ ऐड करनी है और किसी डेस्टिनेशन में जो कि इट विल बी F12 इन दिस केस, हमने इसमें सेव करनी है. F2 comma F0 जो ऊपर गिवन है. F2 holding the value of double 1 and F0 holding the value of double 2, my double 2. ठीक है, this one. F2 will holding the value of my double 1 which is this one, and my double 2 value will be in the register F0. These two values will be added and the result will be here in the F12 which is the destination for the required operation which have to be performed. Syscall. Now we will assemble. Program operated successfully. Now we will run. This is the value. You can change the values. Mean 0001
and 20002 suppose sample. Okay, and now run. It's the value. Okay, so required result. I hope आपको समझ आ गई होगी.